Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yes, please tell me in the chat box about screen. Is it visible? And are you listening me clearly so that I may start my class, because this class is gonna be very long. Okay, because we have to discuss so many things here in this very class, and this is, very long class because it's about discussion and opinion essay. Opinion. Uh, in okay, right. Okay, voice is clear and screen is visible. So now we are going to start module 8, complete guide about IELTS speaking part 3. Firstly, we discussed about part 1, and then we talked about part 2, that is Q card, and now we are going to discuss about discussion and opinion, that is part 3. Okay, so this is the part which differentiate the students from band 6 to 8 or 9. Okay, so if you are doing very well in this part, you can get 7 plus bands or 8 bands in IELTS. So Mr. Hassan, you will yes, I need in this condition. Your camera must be on, okay? And your camera must be on during the whole session. And you can tell me in the chat box, are you listening me clearly? You can tell me in the chat box. So number 1, strategies for giving detailed response. Again, I'll tell you about the strategies, which can make your question answer long. Okay, thank you. So for making your answer very long, you must use 4 strategies, 4 sentence response strategy. Okay, number 1, you will give direct answer. Okay, and number 2, you will add reason or explanation to the very first line or to the very first sentence which you have answered. Okay, direct answer, for example, what is your hobby? My hobby is reading books. Then you will add reason. This is direct answer. And then you will add reason or explanation to that, because why do you like book reading? Okay, number 3, you will add example or contrast. All right, and number 3, Ahsan, your camera is not in the right direction, so put it in the right way. Yes, it must be like that. Yes, it's right now. Example or contrast. You can give your personal example or contrast, means to say that you can describe another thing or that is completely or totally different to that one which you have mentioned earlier. Okay, so the next one. So number 4, result or personal comment or conclusion. You can add your personal opinion on that about which you were talking. Okay, useful phrases to expand ideas. Now I will give you some of the phrases by which you can make your question, your answer long. For example, in my opinion, Adnan Kadir, switch on your camera. In my opinion, this is mainly because, you can say that these are phrases that can expand your answer. You must write them. And bear in mind, I'm not going to share anything with you. I will give you the recording of this module as well as the worksheet for that. Okay, so there are useful phrases to expand your ideas. For example, in my opinion, this will
increase the length of your answer. This is mainly because, for example, on the other hand, as a result, okay, these are some of the phrases by which you can make your answer long. Example, I'm gonna check. All the boys at least must switch on your camera, and all the girls can do that if they wish. Okay. So right. I'm gonna check. Adnan Kadir, switch on your camera. So that I must watch you, look at your face and expression directly. Okay. So now, so now, so now. Okay, Mr. Adnan Kadir, switch on your camera. Switch on your camera. This is compulsory for all the boys at least. So now, next. Useful. Again, I'm saying Adnan Kadir, switch on your camera so that I can see your activities. Okay. And last time I'm requesting. So as a result, this is compulsory. Bear in your mind, all the people, that your camera, I'm not, this is not strict rule for the girls, but it is necessary for all the boys that they must switch on their camera. Okay. Example, do you think governments should spend more money on public transport? Do you think governments should spend more money on public transport? And now answer is, yes, I do. This is direct answer. This is direct answer. This is direct answer. Okay. Okay. जो बॉयज अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते उनको फिर डेफिनेटली मैं रिमूव भी करूंगा. Do you think governments should spend more money on public transport? What do you think about that? Do you think? Wait a minute, guys, please. Mhm. Wait a minute, guys. Wait a minute, guys. Stop sharing. Now share again. Yes. Do you think governments should spend more money on public transport? Example, yes, I do. Direct answer. This is direct answer. Yes, I do. Public transport helps reduce traffic. Now, for example, firstly, you have given a direct answer, yes, I do. And then next reason, public transport helps reduce traffic and pollution. Okay, public transport. Now you, in the second line, you are going to give the reason. Okay, public transport helps reduce traffic and pollution. This is reason. And number three sentence will be about
the example. Okay. And what is example? For instance, cities with strong subway seems have cleaner air. Subway systems have cleaner air. This is example. So now in the fourth line, you will give the result. So overall, investing in it can improve the quality of life. So this is the way to structure your answer in a good way. Okay, so now handling follow-up questions. Sometimes the examiner will ask for, sometimes he will be asking for comparison. How has comparison, and number two, speculation, and number three, evaluation. Okay, so comparison. How has this changed over the years? And if it is about speculation, then what will happen in the future? What will happen in the future? Evaluation. Is this a good or bad trend? Okay, this is evaluation. So you can add these points, for example, comparison, speculation. Speculation means what will happen in the future. And comparison, you can compare past with the present. Evaluation, is this a good or bad trend? You can add this is a good trend or this is a bad trend. Mia Atif, switch on your camera. Otherwise, ये strict rule चल रहा है कि I will remove. जो बंदा अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा, I will remove him. Take a moment to think. Use fillers. So that's interesting question. पहले मैं एक को remove कर चुका हूँ. So I'm asking you to switch on your camera. Yes, now right. So that I can see how are you attending our class. That's interesting question. This is filler. That is interesting question. I've never thought about that, but I would say this is again a filler. Okay, well, it depends. This is a filler. So you can use these sort of filler in your speech. Example. Do you think people will read more in the future or less? He's talking about the reading, and he's talking about the people, about the reading in future. Okay, it will be less or more in future. Okay, now, that's tough one. This is filler. This is not actually the answer. Okay, Miyatif, again, switch on your camera. This is now a rule for all of you guys. That's tough one. This is a filler. So I think people might read less in traditional formats, but more online opinion. Okay, I think people might read less in traditional formats. For example, they will not be reading books in hard form, but more online. The people will be reading online. Okay, this is his opinion. You can add your opinion. Now, and the next one is reason. With the rise of our audiobooks and digital content, reading habits are changing. Definitely the people are going to change their reading habits. So this is the reason you can add. In the long run, now you are going to give a prediction or result. In the long run, reading won't disappear, but it will evolve. Means to say that reading won't disappear, but it will evolve. Means there will be so many methods, there will be so many ways to read the books, or the reading will have so many ways or methods. Okay. Number three, now using advanced structures for opinion and justification. Yes, justifications. Why it matters, part 3. In IELTS speaking part 3, you are expected to. Karna kya aapne? There 4 things are necessary. 4 things are necessary. Express and justify complex opinions. Express and justify. Examiner or the IELTS test will check your ability to, are you able to justify complex opinions, or are you able to express complex opinions? Okay, no, he will check your control over grammar. If you have control over your grammar. Number 3, use varied
sentence structures. Are you able to use different sentence structures? Definitely, this part will decide you are going to get, 7+ bands. And if you are not doing well in this part, you will not be able to get 7+ or 8 bands in your IELTS test. So develop your ideas in detail. Are you able to develop or structure your ideas in detail, or are you not able? If you are able to develop your ideas in detail, you can achieve higher bands using conditionals. And for hypothetical or future opinions, using conditionals. Are you able to use conditional sentences? ये conditional sentences का पता है तो ठीक है, well and good. अगर नहीं पता तो इसको कर लें, लेकिन इसके लिए ग्रामर के लिए मेरा अलग से कोर्स मौजूद है. Yes. Structure. If plus past simple, would, could, might plus base form. Okay. Yeah. If plus present simple, will plus base form. ये अगर किसी को कंडीशनल आते हैं तो ये वाली आपने जरूर यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ मोर पेरेंट्स एनकरेज रीडिंग एट होम, चिल्ड्रन वुड बिकम मोर इंटरेस्टेड इन बुक्स. ओके, इफ मोर पेरेंट्स आर एनकरेज रीडिंग बुक्स एट होम, अगर ज्यादा पेरेंट्स रीडिंग को एनकरेज करते हैं और जो बच्चे हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे. ठीक है, अब ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशनल है, सॉरी सेकंड कंडीशनल है. सेकंड, इफ मोर यानी एक में पास्ट है और दूसरे में भी वुड के साथ पास्ट की फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी. ये डेफिनेटली जब आप इसको करेंगे, कंडीशनल करेंगे, तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी. इफ मोर पेरेंट्स आर इनकरेज रीडिंग एट होम, चिल्ड्रन वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इन बुक्स. ओपिनियन है प्लस रीजन है यूजिंग सेकंड कंडीशनल. ये सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल हुआ है. If governments invest in public transport, the cities will become less polluted. Okay, this is first conditional. First conditional में क्या होता है? What happens in the first conditional? हम present simple tense इस्तेमाल करते हैं पहले हिस्से में और future simple इस्तेमाल करते हैं हम दूसरे हिस्से में. ठीक है जी. If governments invest in public transport, the cities will become less polluted. Cities will become less polluted. Okay. First conditional, a real possibility in the future. First conditional में ये होता है कि you have got a real possibility, यानी वो जो काम होना है वो एक्चुअल में होना है. अगेन बता दूं, ये एक अलग से एक लंबा टॉपिक है. अगर किसी को नहीं आते तो वो मुझे बता सकता है, बट उसके लिए अलग से ग्रामर है. नंबर 2, यूजिंग पैसिव वॉइस टू फोकस ऑन एक्शन और जनरल ओपिनियन. आपने करना क्या है इस बात में? यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस. ज्यादा कोशिश करें एक्टिव वॉइस में ना बात करें कि वी आर गोइंग टू, वी आर सेइंग दैट, आई वांट टू से दैट. नो, यूज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस इन द थर्ड part. Use passive voice. Again, I'm gonna repeat it. Use passive voice. Use passive voice so that you can focus on action or general opinion. Structure: subject plus be plus past participle plus by agent. Example: creative thinking is often neglected in traditional schools. For example, creative thinking is often neglected in traditional schools. अब ये देखें, शिफ्ट जो है पैसिव वॉइस, शिफ्ट्स फोकस ऑन द इशू रादर देन द डूअर. अब क्या है? दोबारा से, क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑफन निग्लेक्टेड इन ट्रेडिशनल स्कूल्स. जो आपके स्कूल्स हैं उसमें क्रिएटिव थिंकिंग को निग्लेक्ट किया जाता है. हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं कि टीचर्स ऑफन निग्लेक्ट क्रिएटिव थिंकिंग इन द ट्रेडिशनल स्कूल्स. लेकिन हम टीचर्स पे बात नहीं करेंगे क्योंकि we have to focus on action, right? So we will use passive voice. समझ आ रही है? क्लियर है जी? एहसान, आतिफ, is it clear? Yes. So your focus must be on your focus must be on your action, not on the doer.
हम बात कर सकते थे द स्टूडेंट्स often neglect critical thinking in their schools or in their classes. You can use that, but you must use passive voice. Shifts focus to the issue rather than the doer. Laws are being implemented to reduce working hours. Laws are being implemented, right? Laws are being implemented. Laws are being implemented. Uh, you can write your questions if you have got any question. You can ask me at the end of the session. Okay. So laws are being implemented to reduce working hours. हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि the courts are implementing the laws to reduce working hours. लेकिन courts को हम नहीं mention करेंगे. We have to focus on our action. Right? Laws are being implemented to reduce working hours. Present continuous passive. Using clauses. Using clauses. Using complex clauses to explain or justify your point. Structure. Using clauses, complex clauses to explain or justify your point. Structure. तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है? You have to use complex clauses here. Again, अपने जहन में रख ले कि ये जो वाला पार्ट है ये आपको 7+ बैंड्स दे रहा है. अगर आप if you follow all these things you can get 7+ बैंड्स. और इसमें ये नहीं होना कि आपने ये वाला लेक्चर सुन लिया है और आप ये सारी चीजों को यूज करना शुरू कर देंगे. नो, आप अपने सामने ये लेक्चर दोबारा सुने, इसको जाके लिखे अपनी डायरियों पे, और आफ्टर राइटिंग वो फिर आप कोई भी क्वेश्चन करें उनके पॉइंट्स बनाएं कि डायरेक्ट आंसर देना है, रीजन देनी है, एग्जांपल देनी, कंक्लूजन देना है. इस पॉइंट 1 by 1 पॉइंट्स लिख के उनको पहले प्रैक्टिस करें. जब आप ये सारी प्रैक्टिस व्हेन यू विल डू दिस प्रैक्टिस, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि जिस तरह आप साइकिल साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक चलाते हैं, तो पहले आप देखभाल के चलते हैं, फिर एक वक्त आता है कि आप यू स्टार्ट ड्राइविंग योर कार, मोटर बाइक. ऑटोमेटिकली ये भी इसी तरह होगा कि यू विल स्टार्ट doing, or you will start answering automatically. But in the beginning you will follow these things. Okay. So now structure, although even those things, because while plus clause, this is complex structure. If you are going to start your answer, although, even though, since, because, while, plus clause, relative clauses, who, which, there, whose, etc. इनके दरमियान दो जुमले हैं. although this thing, even then ये हुआ. ओके, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है. ये आगे चल के मिसालें आप देखेंगे. और रिलेटिव क्लासेस में होता है कि दो जुमले होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ. रिलेटिव में अली इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी पंक्चुअल, ये दो जुमले हैं. आपने इनको मिलाना है. अली इज माय फ्रेंड हु इज वेरी पंक्चुअल. इस तरह की क्लासेस, जुमले आसान ही होंगे पर इनको जोड़ना है आपने इस पार्ट 3 में. Always if you are using simple sentences you will get bands lower than 7. So example, although some people think. अब देखें, हम यहां ऐसे भी कर सकते थे. some people think advertisement are harmless, dot, फुल स्टॉप लगा के यहां खत्म कर देते. आई बिलीव दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग हैबिट्स. ओके, तो मेरा ये ख्याल है कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग हैबिट्स. ओके, लेकिन हमने इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है. ऑल्दो के साथ इस्तेमाल करें. जब ऑल्दो आप इस्तेमाल करेंगे तो एक जुमला मुकम्मल करने के बाद में कॉमा लिखेंगे, फिर एक दूसरा जुमला उसमें ऐड करेंगे, उसी सेंटेंस में एक और क्लॉज ऐड कर देंगे. ठीक है. ऑल दो सम, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट. जहां पे ऑल दो आना है वहां पे आपकी ओपिनियन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी. ठीक है. मुझे पता है मैं बड़ी स्पीड के साथ चल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको सिखानी है. आप इसको किस तरह से करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे और चीजों को लिखेंगे. ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है जी. देन यू विल बी एबल टू डू दैट.
So although some people think advertisement are harmless, I believe they greatly influence spending habits. Okay, जाहिर है हम एडवर्टीजमेंट्स को देख के बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, हमने नहीं भी लेनी होती तो हम although some people think advertisement are harmless, ये बेजर्र हैं, I believe they greatly influence spending habits. तो हम ये spending habits को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। डेफिनेटली हमारा ख्याल नहीं भी होता किसी चीज को खरीदने का, बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट वी बाय दैट। ओके, people who grew up in smaller towns often value simplicity and community more. People, अब देखिए who के साथ हमने people who grew up in smaller towns often के साथ वो often value simplicity and देखिए who के साथ अपने इसको लंबा कर दिया है। हम ये भी कह सकते हैं people किस तरह से कर सकते हैं, द पीपल ग्रो अप इन स्मॉलर टाउन्स ऑफन वैल्यू, हु के साथ आप रिलेटिव क्लास को इस्तेमाल करेंगे, जुमला और भी लंबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यूजिंग कॉजेटिव वर्ब्स। अब कॉजेटिव वर्ब्स क्या है, ये भी अगेन एक लंबा चैप्टर है पूरा, अगर आपको कॉजेटिव वर्ब्स आते हैं। अच्छा एहसान बताइएगा कॉजेटिव वर्ब्स आते हैं कि नहीं, एहसान आते, टेल मी इन द चैट बॉक्स। आप जानते हैं इसके बारे में, पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में? यस, हरी अप इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, हरी अप। डू यू नो? नो, आतिफ नो, एहसान एहसान नहीं आते? अच्छा ठीक है, जाहिर है डेफिनेटली देयर आर प्रॉब्लम्स विद योर ग्रामर, ग्रामर। सो ये डेफिनेटली ये फिर ग्रामर के पोर्शन में ये चीजें जो हैं ये डिस्कस होती हैं, ये चीजें लंबी हैं, आपको एक एक पॉइंट समझना पड़ता है। अगर मार्क्स लेने हैं थर्ड पार्ट में तो आपको ग्रामर पे बहुत ज्यादा बहुत सारा अबूर हासिल होना चाहिए। ठीक है, इससे फिर मैं नहीं कह रहा कि अब दो चार चीजें हैं, यू मस्ट हैव ग्रिप ऑन देम यूजिंग कॉस्टिव वर्ब्स। अच्छा, कॉस्टिव वर्ब्स सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। एक हम काम करते हैं और एक हम करवाते हैं, तो करवाने के लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम कॉस्टिव वर्ब्स कहते हैं। मसलन मैंने कपड़े धोए और मैंने कपड़े धुलवाए, धुलवाने के लिए कॉस्टिव वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में ये एक स्ट्रेंथ है, दिस इज इन उर्दू लैंग्वेज। हमारे पास एक और लफ्ज है, धोना और है, धुलवाना और है। ठीक है, तो खाना और चीज है, खिलाना और चीज है। ठीक है, इंग्लिश में ये चीज नहीं है। वो पॉजिटिव वर्ब्स का सहारा लेके फिर उसको उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माई स्कूल had us participate in public speaking. My school had us participate in public speaking competitions to improve confidence. अच्छा, my school had us participate, had us participate, हमारे स्कूल ने हमें पार्टिसिपेट करवाया, शमूलियत करवाई।